So new topic, second chapter, electric potential and capacitance. Keep reading. Electric potential and capacitance. This chapter will be little bit easy only. Then first chapter ka thoda better or okay. Why easy we'll see. Electric charges and capacitance. So to understand electric potential, first we have to know about electric potential difference. Then only you will understand about potential. Okay. Potential means एक point के वजह से. Potential difference means 2 points के वजह से. So what is electric potential difference? देखो, the amount of work done by external agent in moving a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force. First लिखो, I'll explain. So electric potential difference आपको समझ में आया तो you can do many equations from that. So what is saying? Amount of work done by external agency. Suppose मान लो you have 2 points A and B. I will put a small test charge Q naught at B. Okay. I want to bring this Q naught from B to A. Some work should be done by external agent. We have to do some work, right? So work done by the external agent. At that time, the potential difference is defined as VA minus VB. V is the potential. Why VA minus VB? Final minus initial is equal to work done by external agent in order to bring the charge from where to where? From B to A upon the test charge. This is the definition of potential difference. So B point से A point लेके आने समय the potential difference is defined as VA minus VB is equal to work done by external agent in order to bring the charge from B to A upon test charge. Okay. Suppose tell me X point is there, Y point is there. Suppose I'll put a test charge Q naught here. I want to bring the test charge from X to Y. Tell me how to define potential difference. How to define? Vy minus Vx is equal to work done by external agent in order to bring the charge from where to where? X to Y upon test charge. So potential difference aata hai na? Okay. And one important point, this definition holds good only when you bring the charge from here to here very slowly. बहुत धीरे धीरे लेके आने का. Why? Because if you bring fast में, some work is converted to kinetic energy. At that time, the definition will not hold good. Okay. So in this definition, कब true होगा? Only when you bring the charge very slowly. Okay. So and units क्या है? Tell me. Units कैसा units क्या है? Work done by external agent का joules and Q का coulomb. So joule per coulomb is the SI unit and joule per coulomb ko we call as volts. And luckily the potential difference is scalar quantity. That's why this chapter is easy because there is no vector addition, simple addition only. Okay. So it is a scalar quantity. So a point लिख लो. That charge should be brought very slowly बोल के लिखो. The charge should be brought very slowly so that kinetic energy does not change. So that kinetic energy does not change. Okay. So now I want lesson का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. मतलब एक ही पॉइंट का वजह से, मतलब इनडायरेक्टली वन पॉइंट को आपको जीरो कर देने का, वन पोटेंशियल जीरो बनाने का. देन ओनली विल गेट ए पॉइंट, एट पॉइंट में पोटेंशियल, राइट? सो देन देखो क्या करने वाला है पोटेंशियल को. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो. द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
per unit charge in bringing the charge from infinity to that point without any change in kinetic energy. I'll explain. So suppose A point is there. Now मैं क्या करूंगा, B point को I'll not put beside, I'll put B point at infinity. B point at infinity, very far में. That in physics में potential at infinity will be 0. At infinity में 0. Now I will put the test charge at infinity position. At infinity position. Okay. Now क्या होगा? I want to bring the charge from infinity to the point, right? Some work should be done by external agent, right? External work should be done. External agent means हम लोग जो काम कर रहे हैं, that one. Okay. Then tell me potential difference का definition क्या होगा? Tell me. V final minus V initial कितना होगा? VA minus V infinity is equal to work done by external agent in order to bring the charge from where to where? Infinity to A upon test charge. And V at infinity is 0. Khatam. We got the potential at one point is simply work done by external agent in order to bring the charge from infinity to A upon test charge Q0. Okay. So external work done बोल के agent से अच्छा external work done बोल के लिखो. In order to bring the charge from infinity to A upon test charge. This is the definition of electric potential. Electric potential. So our assumption करके we are bringing the point B to infinity so that the potential at that point is 0 and we can get the potential at one point. Okay. Some So important. why is V at infinity 0? Why? हाँ, Is see, V at एक assumption करना पड़ेगा compulsory. देखो ground में potential energy is 0. We're assuming. But actually ground में potential energy 0 नहीं है. Some potential will be there. So एक जगह में because we want only at one point. So that's why एक बना दिया. So potential difference is only defined in physics. Potential नहीं है. Okay. So we are assuming one potential निकाल रहा है. Okay. Now some important points note कर लो. Work done by external agent against electrostatic force is to be considered. Suppose मान लो Q0 charge is there. इसके ऊपर some electric force is acting in this direction. Right side में electric force is acting in this direction. F electric. Electric force का क्यों act होगा? Some more charge is there इधर. Charge की वजह से electric field होगा. उस electric field की वजह से charge के ऊपर force लगेगा QE. Right? Electric force will acting. Okay. So हम लोग we have to bring this charge from this direction. Some displacement x. So work done by external agent should be done, right? That force should be applied, right? Work done by external force to in order to bring the charge to the x distance, right? So हमारा काम क्या है? Net force should be 0. See, अगर देखो, if I leave like this, electric force is doing the work and automatically going, the charge is going. But हमारा काम क्या है? We have to bring the charge very, very slowly from some point to one point, right? So external force लगा के we are bringing, right? That means external force is magnitude wise is equal to or minus of external force is equal to minus of electric force. That means I can tell work done by external agent is always equal to negative of work done by electric force. See, this one you have to understand. Why? Because questions में आपको माइनस प्लस में तेड़ा होता जाएगा, समझ में नहीं आएगा, माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं बोल के.
इलेक्ट्रिक फोर्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्सटर्नल हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये थोड़ा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल ओनली, ये थोड़ा ज्यादा है, so that we have to bring slowly we have to bring. Okay, that's why this should be understand, electric force and work done by external agent is always opposite direction. Writing Aisha, so vector form में लगा था, external force is equal to minus of electric force. Next, this electric force is a which force we studied, right? Electrostatic force कुछ भी होने दो, it is a conservative force, right? तो लिखो electric force is conservative, that means work done by conservative force is path independent, it depends on initial and final points. कोई भी रास्ता जाओ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेम, वो तो हमेशा याद रखो. एंड थर्ड पॉइंट तो मालूम है, टेस्ट चार्ज मस्ट बी मूव वेरी वेरी स्लोली, धीरे 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 लेके आने का, so that it should not go, it should not, work done should not went to the kinetic energy, changing kinetic energy. And the work energy theorem say we will get, right? Work done by all forces equal changing kinetic energy. So that time that definition will not hold good. Complete. Okay. Now हम लोग क्या करने वाला है, एग्जैक्टली फॉर्मूला चाहिए, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ही आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट. तो एग्जैक्ट फॉर्मूला आएगा, दैट फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल्स करने वाला है. ओके, सो व्हाट इज सेइंग, सपोज पॉइंट चार्ज इज देयर क्यू, आर डिस्टेंस दूर में, एग्जैक्टली मुझे इस पॉइंट पी में मुझे पोटेंशियल चाहिए, वी चाहिए पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. ओके, ये थोड़ा डेरिवेशन करेंगे सो दैट थोड़ा आपको फ्री फ्लो हो जाएगा. एनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, दैट्स व्हाई व्हेन यू डूइंग नाउ पीवीक्यूज थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज आपको इंटीग्रेशन करना आ रहा है, वो सब कुछ आ रहा है डेरिवेशन करने से. ओके, चलो, क्यू की वजह से आर डिस्टेंस दूर में पॉइंट पी में व्हाट इज द पोटेंशियल चाहिए. ओके, उसके लिए आपको बेसिक फार्मूला तो मालूम है, पोटेंशियल एट वन पॉइंट, व्हाट इज द फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in order to bring the charge from where to where, from infinity Infinity. to the point P upon test charge. This is a basic definition. यही यूज करने वाला है, यही यूज करने वाला है टू गेट द पोटेंशियल. ओके, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी के पास रख के आई विल ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P. Some work done by external agent should be there, right? That one we are calculating. Then if I divide with that work done, we'll get the, with charge we'll get the potential at that point P. Right? Understood clear? Okay. Now इसके ऊपर मैं चार्ज रखा ना, इसके ऊपर tell me what are the forces acting on it. See, because of this plus Q charge, there is an electric field, and electric field की वजह से there is electric force acting on this charge, F electric. Right? हम लोग का क्या करने के, चार्ज को धीरे धीरे लेके आने के इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? सो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, राइट? दिस थिंग वी हैव टू डू, बिकॉज आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, व्हिच वन वी वांट टू फाइंड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. हम लोग जो काम कर दैट वन, दैट्स व्हाई एक्सटर्नल फोर्स आई एम टेकिंग. ओके, so in order to find that one, first check whether the force is variable force or constant force. We have to see first electric force जो भी है, that is variable force or constant force. उसके लिए मैं क्या करूंगा, I will put a test charge from इधर से x distance दूर में,
I'll put a test charge Q naught here. Okay, x distance दूर में I am placing the test charge. इसके ऊपर भी electric force is acting, and here external force acting, right? We have to bring, right? Okay. Now tell me electric force कितना है? Tell me electric force का formula क्या है? Two charges are there separated by distance x. What is the electric force formula? KQ Q naught by K X capital square. Q, K capital Q Q naught by x square. This is electric force. But हम लोग को कौन सा force चाहिए? External force चाहिए. And you know, external force is exactly opposite direction to that of electric force. So vectorially we are putting minus, right? So external force is equal to minus of electric force. So therefore minus K Q Q naught by x square. Now tell me whether this external force depending on x or not. So as the x is changing, the force is changing. मतलब ये force जो भी act हो रहा है, that is variable force. Variable force का work done formula याद है? We done constant force, variable force in work done में. So constant variable force का F dot ठीक dx है? integral. F dot dx. ओके, ऐसे कर रहे ना? हाँ, वो यूज करने वाला है. मैं क्या करूंगा? मान लो इस चार्ज को certain displacement लिया, dx displacement हुआ. Okay, small displacement I made. Okay, small work done we'll try to find. Small work done dw external force external work done is equal to f dot कितना है displacement dx, right? f कौन सा है? External force dot dx. Okay, tell me here force external force and displacement are in the same direction. Force and displacement are in the same direction. So angle is how much? 0. So f external dx cos 0. Cos 0 is 1, right? Small work done by external आ जाएगा. F external के जगह में minus k q q naught by x square into dx, right? Now in order to get the total work done क्या करेंगे? Total work done, small work done you got. I want total work done from infinity to the value at r distance में. So क्या करने वाला? Integrate करने. Okay, करो, integrate करो. So therefore work done by external agent is equal to integral dw external minus बाहर लेके आएंगे from where to where? Infinity to the point p. P is nothing but r distance, right? Infinity to r k q q naught by x square dx. Now integrate करो. So k q q naught बाहर आ जाएगा, constant है ना? So work done by external agent is equal to minus k q q naught and integration of x power minus 2 कितना होगा? 1 by X. So minus 1 by x, right? Minus 1 by x. X power minus 1 by minus 1, right? So from infinity to the r. So minus of minus plus हो जाएगा. K q q naught into 1 by upper limit minus lower limit. 1 by r minus 1 by infinity. So 1 by infinity is 0. So k q q naught by r. Okay. Now you got work done by external agent. So how to get potential at point P? Simply divide work done by external agent upon q naught, right? So k q q naught by r by q naught. So q naught cancel. Therefore, potential ka formula how much you got? K q by r is the formula. Potential at point P is k q by r. This is the first formula, electric potential ka formula. Because of point charge k q by r. लर्न कर लो डेरिवेशन का, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा. देन क्वेश्चंस करेंगे. डायरेक्टली फॉर्मूला बोल के कर देते तो बैटिंग जैसे हो जाएगा. सो हियर पोटेंशियल डिफरेंस का समझ में आया. हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू इंटीग्रेट द टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना भी आ गया. एंड ये बेसिक डेफिनेशन आल्सो यू गॉट. Okay, so what is the formula? Tell me. Because of point charge r distance में what is the potential means?
K Q by R. And here we have to put, since it's scalar quantity, we have to put with sign. Charge Q with sign लगाना पड़ेगा. Negative with the negative, positive with the positive. Okay. Because electric field में we should not no need of putting sign. Why? Because vector quantity. Vector quantity already we are putting direction, right? So no need of putting. But either now scalar quantity. Second chapter पूरा scalar quantity only. With sign रखना पड़ेगा. Okay. चलो. Now calculate करेंगे. Formula आ गया ना? Should I understood it? K Q by R. Okay. चलो. करो. Calculate the potential at a point P due to charge located 9 centimeters away. Simple. Charge is there 9 centimeters away. Mein I want to find the potential at this point P. Vp is how much? And SI units will be volts. Okay, joules per coulomb, but volts. Four into 10 power 4. Yes, 4 into 10 power of 4 volts. So मैं ये सेंटीमीटर to मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा. साथ एक फॉर्मूला क्या है? Potential is K Q by R. K is 9 into 10 power of 9. Q is how much? 4 into 10 power of minus 7 by R. R is 9 into 10 power of minus 2. So 9 cancel. 10 power of minus 9. ऊपर गया तो क्या होगा? 10 power of 11. 11 minus 4 into 10 power of 4. Okay. Now obtain the work done in bringing a charge, that charge from infinity to the point P. So work done is asking. Whether answer depends on the path or not, he is telling. वो चार्ज को लेके आने के लिए कितना, मतलब इसका पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल तो सेम है, वो चार्ज को लेके आने के उस टाइम में कितना वर्क डन करना पड़ेगा. 8 into 10 to the power minus 9. Minus 9. no. So we know this formula, right? Work done, potential formula क्या है? Work done by external agent in order to bring the charge from infinity to the point P upon test charge. Now test charge is given. So multiply करो. Potential is 4 into 10 power of 4 into charge is 2 into 10 power of minus 9. समझ रहा है? Test charge जैसा. Test charge I am bringing from one point to other point. So कितना होगा? 8 into 10 power minus 5. 10 power of minus 5 joules. So this much work done in order to bring the charge from infinity to the point P. Understood? So ये सब कुछ derivation किया है, that's why थोड़ा able to understand. And path whether depends on the path means no. ऐसा लेके आओ conservative force है ना, so what done is same. चलो. Now electric potential due to system of charges. अभी तक एक charge की वजह से potential we found. Okay. So suppose you have many charges, Q1, Q2, Q3. Okay. इस पॉइंट में ये R1 है, मान लो ये R2 है, ये R3 है. Okay. What is the net potential at point B? Potential because of discharge की वजह से potential will be there. Discharge की वजह से potential. So what, tell me what is the formula? We have to add directly. तो कितना होगा? K Q1 by R1 plus K Q2 by R2 plus K Q3 by R3. अगर माइनस है तो सपोज मान लो माइनस Q4 R4. सो क्या करेंगे? माइनस K Q4 by R4. लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे हम लोग किया ना, ऐसे ही. सिंस इसके उधर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता था? पॉजिटिव चार्ज के आवे, नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स, वेक्टोरियल वी शू ऐड. बट इसमें कुछ नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एडिशन. ओके.
is now इसका बेस में सिस्टम ऑफ चार्जेस के बेस में we are doing the questions now potential. Done? Covered? चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे. चलो करो, पेशेंस से आराम से करो. 3 charges are given, are placed at this coordinates are given. Find the potential of system of charges at this point. Okay, so 3 charges are given: q1, q2, q3. This coordinates are 0, 0, 0. This is A, and B का coordinates are -1, 2, 3, and C का 2, -1, 1. I want इन तीनों चार्जेस की वजह से I want the potential at this point. मान लो the point is here. उसका coordinates are 1, -2, -1. So he's asking इस point में potential कितना है because of these 3 charges. मालूम है ना why the coordinates are given to you बोल के distance find करने के लिए the given. So देखो सात्विक, इसका what is the potential formula? Tell me सात्विक, because of q1 charge what is the potential at this point P? Tell me. K q1 by r, right? R is the distance, right? Distance कैसा आएगा आपको वेक्टर फॉर्म में लिखो पहले. आपको r वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? 1 - 0 i कैप मतलब 1 i कैप, -2 - 0 is -2 j कैप, and -1 - 0 is -1 k कैप, राइट? दिस इज r वेक्टर, राइट? बट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करो. मॉड r कितना होगा? √1 + 4 + 1, so it is √6 is the distance, right? r वैल्यू आ गया. सिमिलरली इसका भी r वैल्यू फाइंड करो, इसका भी r वैल्यू फाइंड करो. देन सबस्टिट्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट p is kq/r + kq/r + kq/r. विथ साइन रखना पड़ेगा. दिस इज 1 माइक्रोकूलम, दिस इज -2 माइक्रोकूलम, दिस इज -1 माइक्रोकूलम. Is it -2 mu by √34? -2 u ना? 2 mu by नो. इसका r कितना है? दिस r how much you got? √34. नो, √36 आएगा, 6 आएगा. So -3 mu into 10⁻⁹. -3 3 mu into 10⁹. 9. ओके, देखेंगे सब लोग को कितना है. इसका डिस्टेंस कितना है सात्विक? √6 and 6, and again I got √6. दिस इज 6 you got, huh? Yes, sir. This is √6. Yes. हाँ खत्म. नो यूज करो. k v at point p is k q1, ठीक है, q1 by √6. ठीक है, 1 लगा देंगे. 1 माइक्रोकूलम. ओके, माइनस k 2 माइक्रोकूलम by 6 minus k 1 माइक्रोकूलम by √6. Now take common until the answer. k value you know, right? 9 × 10⁻⁹ बोल के यूज करो. सो देखो k वैल्यू कितना है? 9 इंटू k बाजू में ले लेंगे k. सो 10⁻⁻6 by √6 minus 2 into 10⁻⁻6 by 6 minus 1 into 10⁻⁻6 by √6. तो 10⁻⁻6 भी ला बाहर ले लो. 9 into 10⁻⁹ into 10⁻⁻6 1 by √6 minus 2 by 6 minus 1 by
रूट 6. सो 1 by रूट 6 प्लस माइनस कैंसिल, राइट. सो 1 by 3 आएगा ना. सो कितना होगा? माइनस 3 3 9, राइट. सो माइनस 3 into 10 to the power of 3, yeah? Yeah, 3. 3 potential, right, volts. So you got Yes, I didn't convert it. I wrote the new Coulomb. micro mu means micro is 10 power of minus 6. आया सन में आपको? Yes. ना करो. No vector addition, just addition. That's it. Calculate the potential at the center of a square of side root 2 meters having charges at the 4 corners of a square. Kadam. He's asking 4 corners of a square. Mein the charges are there. Q1, Q2, Q3, Q4. He's asking, and root 2 meters is a side of a square. He's asking what is the potential at the center at this point P. So a distance कितना होगा? Center a distance. Total distance is also root 2. So if you do Pythagoras theorem, a distance कितना होगा? Root 2 whole square plus root 2 whole square. 2 plus 2, root 4 is 2. Right? ये पूरा 2 meters है ना? So आधा meter will be how much? This is 1 meter. 1 meter. So मेरा Pythagoras theorem say totally will get 2 meters. So this will be 1 meter, this will be 1 meter. Now find the potential at this point P. Is it 45 into 10 power 6? 10 power 3? 45 into 10 power of 3, no? Which sign the call? First one 100 microcoulomb, right? So K 100 microcoulomb K Q by R. R is 1 meter only. So minus 39 and Minus 2. minus Wait, sorry. how much? One. Distance. So 9 into 10 power 4. Very, very good. 9 10 power of 4 is answer. Yes. So 50 microcoulomb by 1 बाद में plus K 20 microcoulomb by 1 and then last one is minus K into minus 60 microcoulomb by 1. So K 10 power of minus 6 बाहर ले लो. So कितना होगा? K 9 into 10 power of 9 into 10 power of minus 6 common ले तो 100 minus 50 50 50 plus 20 is 70 70 minus of either minus order 70 minus 60 10, right? So 10 आएगा ना. So कितना होगा? 9 into 10 power of 4 volts is answer. You 45 into 5 कर दिया. I took denominator is 2. हाँ diameter. Yeah, total distance नहीं है. ये इधर point तक कौन, right? 1 meter. Okay. So potential is easy, right? चलो इसके लिए थोड़ा हार्ड करने के लिए there is a continuous distribution. Okay. आगे ना continuous weighting, right? Continuous का. तो ये formula K Q by R is only for point charge. As continuous charge का we cannot use K Q by R. Okay. So through questions के through we will learn उसका कैसे करेंगे बोल के potential. So example देखेंगे continuous charge का. देखो suppose एक square is there, पूरा charge भरा है, उसके वजह से potential at this point बोले तो we cannot put K Q by R because it is made up of so many point charges. Okay, एक line is made up of so many point charges and कोई भी एक plate is made up of so many point charges. So हम लोग क्या करने वाले हैं, एक point charge की वजह से we will find a small potential and we will integrate to get the total potential. वही काम है. Okay, चलो now इसका numericals through learn करेंगे. चलो, a charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L
as shown in figure. हम लोग ये ड्रॉ करेंगे. So this is a rod of length L, uniformly charged, मतलब charge completely distributed, and total charge, इसके ऊपर total charge is Q. Okay. The electric potential at a point O lying at a distance L from the end A. This is AB rod. A B rod. Okay. End से L distance दूर में I want to find the potential at this point P. End से L distance दूर में I want to find the potential at this point P. कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. What is the formula? KQ by R only. Because of this, no. KQ by R क्यों? एक continuous charge distribution है. We can't use KQ by R. Okay. नहीं तो पीपल क्या सोचेगा, सेंटर ऑफ मास सोचेंगे, ये L प्लस L बाई 2 लगाएंगे बोल के लगाएगा, वो भी रॉन्ग है. बिकॉज सेंटर ऑफ मास कब यूज करने का, वेन एवर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू द like power R, power 1. The physical quantity power should be there, 1 should be there. Like potential energy formula क्या है, mgh, right? Distance power 1 पर depend हो रहा है. That's why in potential energy में we can use center of mass. Center of mass concept will be useful only when any physical quantity proportional to distance power 1 है तो direct relation रहने का, then we can use center of mass. Like example potential energy. But here we can't use because k cube by r, right? Inverse relation है, we can't use. Okay. चलो तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे. This is first one dimension, right? One dimension में we'll use lambda, right? Lambda is what? Charge per unit length, right? Now क्या करेंगे, we know only one formula, point charge का formula only we know. So that's why point charge कट करके क्या करेंगे, एक छोटा सा point charge I cut, उसका charge is dq, and इधर से कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस दूर में है that charge, and इसका लेंथ इज dx, इसका स्मॉल लेंथ का dx है. थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं सो दैट वी कैन इंटीग्रेट. ओके. नाउ इसका इस छोटा चार्ज का लैम्डा कितना होगा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ dx, बहुत कम आएगा. ओके. नाउ सिंस इट इज ए वेरी पॉइंट चार्ज का स्मॉल पोटेंशियल कितना है, स्मॉल पोटेंशियल इज k, q is dq by r is x. Small potential we got. Okay. But उधर dq कितना है, dq is how much? It charge मालूम नहीं, total charge तो मालूम है q, it charge नहीं मालूम, that's why we are writing in terms of lambda में. So what is dq is lambda times of dx, right? वो कितना लेंथ होगा उतना चार्ज होगा, right? So k lambda dx by x. Okay. Now I want total वैसा dq सभी को addition को we call as integration. So I'll integrate both sides to get total potential. So total potential is integral from where to where. If the dq charge is here, how much distance from here to here? The dq L. charge is here, L. And if the dq charge is here, how much distance from this point to point? 2L. 12. खत्म. Integrate करो. K lambda dx by x. So k lambda will be constant, बाहर आ जाएगा. ना करो कितना आएगा, log n. हाँ बोलो log, हाँ पूरा सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके log m माइनस log n इज log m by n यूज करके आंसर बोलो फाइनल. Log 2. K lambda log 2, हाँ k lambda by a into a, into. yes correct. Okay, so potential at the point P is equal to k lambda integration of 1 by x is log x to the base c. Limits are from L to 12. So potential at point P is k lambda into log 12 to the base c minus log L to the base c. Log m minus log n. So k lambda into log m by n. So 12 by L to the base c. L cancel, log to the base c. So k lambda log 2 to the base c.
If you want, substitute lambda के जगह में q by l also, because he has given in terms of q, right? So and k के जगह में 1 by 4 pi epsilon naught q by l log 2 to the base c is the answer. Okay, there is no formula by heart करने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको मेथड लर्न करना पड़ेगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. ओके, साथ ही वीडियो. चलो नो करो, हाँ करो. यूनिट ट्राई देखते हैं. Find electric potential on the axis of the ring of radius r having charge q uniformly distributed. Okay, so a ring है, इसके ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब टोटल चार्ज इज q. सेंटर से इसका रेडियस इज r. मतलब ऐसा है, रिंग ऐसा है. ओके, इस डायरेक्शन में रिंग. इधर से x डिस्टेंस दूर में I want to find the potential at this point P. So kq by r, right? Kq by r. Right? No. Okay, no. Because it is a distributed charge, not a kq by r. No, fine. देखते ट्राई करो, एक बार ट्राई करेगा ना आ जाएगा पूरा. सो इधर भी छोटा सा चार्ज कट करके क्लू है तो दूंगा क्लू. स्मॉल चार्ज dq कट कर रहा हूं. एक कितना डिस्टेंस है इधर से इधर तक, r डिस्टेंस है. r is already, you know, r is how much? Under root 90 degrees, right? So under root r square plus x square. हाँ. Now इधर के ये because of this point charge की वजह से what is the potential? Small potential is how much? dv is equal to k dq by root of r square plus x square. Okay. A distance constant of a ring है, tell me. A distance, a ring है. ऐसा 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 everything distance is same, constant. So now to get total potential क्या करेंगे? Integrate both sides. So v is equal to k बाहर, a distance also बाहर, happily. K by under root r square plus x square integral dq. And what is dq 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 मिल गया तो पूरा चार्ज कितना है उसके ऊपर? Q. Q. खत्म डालो. So potential at the point P is k q by under root r square plus x square. The potential at axis बोल के चाहे तो लिखो. Point P से अच्छा at axis. ये फॉर्मूला लर्न कर लो, आ जाएगा वाला. k q by root of r square plus x square. You tell me if the point P at center. You tell me what is the potential at center? X value is how much? When the point P is here, the x value goes on decreasing. So at the center में x is 0. K So by कितना R. होगा? खत्म. This is like point charge only, right? Center में k q by r. Axis में ज्यादा है, center में ज्यादा है potential. Center. Center में, because denominator is smaller, right? So bigger हो जाएगा. So center में ज्यादा है. So if I draw potential versus distance graph, if I draw, so कैसा होगा? Center में ज्यादा है potential. So बाद में decreases. So center में ऐसे increase होगा, बाद में ये रिंग मान लो, ये रिंग का ऐसा लगाया. सेंटर में पोटेंशियल इज मोर, बाद में डिक्रीजेस. सो ये फॉर्मूला बैड करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. दोनों बैड करेंगे. ओके. So what happens if x keeps changing? Do we have to integrate? व्हाट x इज चेंजिंग? हाँ, Changing. x क्या हिसाब से ओनली, राइट? इसमें फॉर्मूला में x के हिसाब से विल गेट द पोटेंशियल, राइट? दिस फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है. एज x चेंज होता जाए तो उसका अकॉर्डिंगली पोटेंशियल गोस ऑन चेंजिंग, वो डिक्रीज होता जाएगा. वो कितना बोलते तो सब्स्टिट्यूट करने का इसमें. Okay. ओके.
So formula बैठ करो. Potential on the axis में what is the formula? Potential axis. हाँ, श्रीराम बोलो. ये important formula. Potential at axis में k q by under root r square plus x square. R square क्या है? Radius and x is the distance square. हाँ, बोलो सात्विक बोलो. मुझे एक्सिस एंड सेंटर में चाहिए पोटेंशियल. K cube by root of r square plus x square is axis and K cube by r is center. सेंटर. ओके, सेंटर में पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से सेंटर में के क्यूब आर. दिस इज एक्टिंग लाइक ए पॉइंट चार्ज ओनली. इज एक्टिंग लाइक पॉइंट चार्ज. ओके, चलो हाँ करो, देखते हैं. बड़ा क्वेश्चन से पेशेंस से करना पड़ेगा. टू आइडेंटिकल thin rings, each of radius r, are coaxially placed at distance r apart. So identical rings are there, uniformly distributed है. इसका रेडियस r है, आइडेंटिकल है ना, दोनों का रेडियस इज सेम. ओके, आर कोएक्सियली प्लेस एट डिस्टेंस r, इन दोनों का डिस्टेंस आल्सो r. इसको वो डैश मान लो. ओके, दिस फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग. ओके, एंड इसके ऊपर चार्जेस लगा q1 q2. एक q1 यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया है, पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. एंड q2 इज आल्सो uniformly spread on the charge ring. Okay, the work done in moving a charge q from center of the one ring to other. Suppose मान लो I place a charge at the center q here. इस रिंग से सेकंड रिंग को मैं लेके आने जाता हूं. I want to bring the charge from first ring to second ring. So how much work is done बोल के is asking. Okay. Tell me, work done बोलता we will use the potential difference concept. Potential. So क्या बोलो? Potential difference बोलो. V2 minus V1 ना, V1 minus V2 हो. V2 because final minus initial. V2 minus V1 is equal to work done by external agent in order to bring the charge from 1 to 2 upon test charge is Q. So from this, what is work done by external agent is Q times of V2 minus V1. मतलब अगर मैं पोटेंशियल 2 में फाइंड करूंगा, 1 में फाइंड करूंगा, सेपरेट करूंगा, विल गेट द आंसर. ओके, नाउ आप कौन बोलेगा पोटेंशियल एट 1? V1 फाइंड. इस पॉइंट में पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से रहेगा? किस चार्ज की वजह से रहेगा? देखो, दो रिंग्स आर लाइक दिस, कोएक्सियली प्लेस्ड. ओके, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है. इस पॉइंट में पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से रहेगा? बोथ रिंग की वजह से रहेगा, राइट? यू टेल मी, फॉर दिस रिंग this point is acting like center point. So what is the formula we use? K Q1 by R plus for this ring, this point is acting like axis point. And axis point का formula क्या था? Axis point का formula is K Q2 by under root कितना होगा? R square plus x square is also R square only. इस समझ में है? K cube by under root R square plus x square. So कितना होगा? V1 is K Q1 by R plus K Q2 by 2R square means root 2R, right? This is the potential at V1. Now V2 find करो. इस पॉइंट के पोटेंशियल दो पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इज एक्टिंग लाइक सेंटर. सो K Q2 by R plus, and for this ring, this point is acting like a axis point. Axis point का formula you know, K Q1 by under root R square plus x square. X is also R on, right? So R square plus R square. So it is V2 is equal to K Q2 by R plus K Q1 by root 2R. Now separate करो and substitute in this formula, will get work done.
Sir, K Oh. small q into Q2 capital Q minus okay, I just KQ into Q2 minus Q1 into Uh. root 2 minus 1 by root 2R. Oh, yes, correct. So now V2 minus V1 करो, V2 minus V1 करने से क्या होगा? कुछ कैंसिल नहीं होगा ना? ओके, सो KQ2 by R plus KQ1 by root 2R minus KQ1 by R minus KQ2 by root 2R. This is V2 minus V1. Now you can take common K by R, you can take common. तो कितना होगा? Q2 plus Q1 by root 2 minus Q1 minus Q2 by root 2. Okay, into the charge Q, right? वर्डन के लिए into charge Q. You can leave it like this. और LCM लगा के कर सकते हैं. क्या? And Q2 minus Q1, ये दोनों क्या हो जाएगा? Q1 minus Q2 by root 2, right? So like this you can solve. इधर तक छोड़ सकते हैं because values are not given, right? You can leave them. Understood? No. So एक लास्ट कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का बाकी है, दैट इज डिस्क में. सो ट्राई कर सकते हैं, बड़ा है, बहुत बड़ा है. ओके, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क. ओके, सो देयर इज ए डिस्क है. डिस्क में आपको सिग्मा यूज करने वाला है बिकॉज चार्ज पर यूनिट एरिया पूरा उसका सिग्मा है, उसका रेडियस इज आर, उसका रेडियस इज आर. ए डिस्क है, इधर से x डिस्टेंस दूर में आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. हाँ, क्या करने वाला है? एंड यू नो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया. व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? सो ये यूनिफॉर्म पूरा चार्ज पूरा क्या है, पूरा स्प्रेड हो गया है इसमें, डिस्क के ऊपर एरिया पर स्प्रेड हो गया. ओके, सो इट इज नॉट KQ by R. सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा चार्ज टेस्ट चार्ज कट करना पड़ेगा. इस डिस्क का व्हाट इज द एलिमेंटल चार्ज, क्या होगा डिस्क का एलिमेंटल चार्जेस? MR. कितना? Small R. मतलब नो नॉट आर्क, Ring. रिंग. बहुत सारा रिंग्स ऐड करने से डिस्क बनेगा. ओके, सो मैं क्या करूंगा, सेंटर से y डिस्टेंस दूर जाके आई विल कट ए स्मॉल रिंग. ओके, रिंग कट करूंगा. ओके, उसका थिकनेस इज dy एंड उसका चार्ज इज dq. ओके, ये रिंग ऐसा है, ऐसा रिंग है, इसका रिंग है. एंड यू नो रिंग के वजह से दिस एक्टिंग लाइक एक्सिस पॉइंट. दिस रिंग के स्मॉल रिंग के वजह से दिस एक्टिंग लाइक एक्सिस पॉइंट. एंड पोटेंशियल कितना होगा, स्मॉल पोटेंशियल कितना होगा? dv इज k dq by under root r is what? Under root y square plus x square. याद है x एक्सिस में फॉर्मूला? बिकॉज रिंग ऐसे है ना, दिस पॉइंट इज एक्टिंग लाइक एक्सिस पॉइंट. एक्सिस का पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है, पोटेंशियल k क्यूब बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. r इज द रेडियस, इसका रेडियस कितना है? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट? खत्म. नाउ टोटल पोटेंशियल चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए इंटीग्रेट करने. ओके, फ्रॉम वेयर टू वेयर विल इंटीग्रेट. अगर ये रिंग नजदीक है तो 0 एंड ऊपर है तो 0, r रेड 0 टू r. रिंग्स पूरा ऐड करने से आपको टोटल आ आएगा, राइट? हाँ, नाउ इंटीग्रेट करो. नाउ व्हाट इज dq? इसका कितना होगा? सिग्मा इज Sigma dy. चार्ज पर यूनिट एरिया dA. ओके, सो v इज इक्वल टू इंटीग्रल, बिकॉज आपको y टर्म्स में चाहिए, y टर्म्स में चाहिए ना. सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग dq इन टर्म्स ऑफ y में. देखेंगे कैसे लेके आएंगे. k dq is nothing but sigma into dA by under root y square plus x square. ओके, dA कितना है? स्मॉल एरिया वी नो. कैसे लेने का? स्ट्रेट लेने का टोलरेट.
हाँ स्ट्रेट लेके कितना है, इसका थिकनेस इज dy एंड इसका circumference is 2 pi y, right? So what is the area? dA will be 2 pi y into dy because we are trying to bring in terms of y में, y terms में. Y is the thing, right? हाँ नो करो, कितना होगा? v is equal to k सिग्मा बाहर ले लो, इंटीग्रल 0 to r. हाँ dA कितना होगा? एरिया इज 2 pi y dy by under root y square plus x square. ओके सो आई टोल्ड यू इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, राइट? सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा. सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वी टुक एज टी स्क्वायर, याद है? सेम डेरिवेशन वी डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में. एक थर्ड वेरिएबल टी लगा रहा हूं बिकॉज दैट इंटीग्रेशन वी कैन नॉट गेट. ये मैथ्स में आप करने वाला है, मैथ्स सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ तो कर सकते हैं. नाउ इंटीग्रेट करो इसको बिकॉज एक्स इज कांस्टेंट, राइट? एक्स इज फिक्स्ड. सो 2y dy इज इक्वल टू 2t dt. So 2 cancel. Now y dy के जगह में t dt, right? So v is equal to k sigma under 0 to r 2y 2 pi y dy के जगह में t dt, right? t dt by I took y square plus x square t square, right? So ये अंडर रूट किया तो क्या होगा? t आ जाएगा, right? समझ आ रहा है? t. Now t कैंसिल कर सकते हैं ना, ये बाहर आ जाएगा. v is equal to k sigma into 2 pi integral dt is t. Okay, t from 0 to r. Okay, t is what? T is equal to under root to y square plus x square, right? So k sigma 2 pi t के जगह में I'm substituting under root y square plus x square and limits are from 0 to r. Now x is constant, y के जगह में लगाओ, सब करो y के जगह में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ. पोटेंशियल कितना आएगा? k sigma 2 pi upper limit minus lower limit, right? So r square under root r square plus x square minus 0 लगाए तो x आया. एंड आपको k के जगह में यू कैन सब्स्टिट्यूट 1/4 pi epsilon naught. सब करो v is equal to 1/4 pi epsilon naught sigma 2 pi under root r square plus x square minus x. So pi cancel, 2 2 ja. So therefore v because of disk is sigma by 2 epsilon naught into under root r square plus x square minus x. The disk of the potential at this point P. So potential at the continuous charge distribution done. Okay. आपको ये डेरिवेशन एक बार फिर से एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करो. डिस्क वाला ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में किया ना, सो एक बार फिर से प्रैक्टिस करो. ऐसा क्वेश्चन ओनली आपको किया करने से रैंक को थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा. दैट फार्मूला वाला क्वेश्चंस उतना ज्यादा नहीं आएगा. थोड़ा फॉर्मुलास भी चाहिए कंपलसरी, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, देन ओनली यू कैन क्रैक द एग्जाम्स.